So 11th physics chapter is sound waves, and this is from HSC textbook. HSC textbook में ये है chapter number 8. ठीक है, HSC 11 का टेक्स्ट बुक है, इसको चैप्टर नंबर 8 और मैं यहाँ पर इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करूँगा. सो दिस इज 3 में का 1. ये है ये क्वेश्चन नंबर. अ सर्टेन साउंड वेव. ठीक है, let's start now. तो इसको शुरू करते हैं. A certain sound wave in air has a speed of what simple question है v. v is equal to 340 मीटर पर सेकंड. देखिए एचएससी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं. दे आर ऑफ द टाइप फार्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर. This is the velocity and the wavelength lambda. Wavelength is 1.7 meter for this wave. Calculate a. क्या frequency. Frequency is denoted by n and v the time period t. फॉर्मूला लिखूंगा मैं v is equal to n lambda. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. मुझे चाहिए n is equal to v upon lambda, that is equal to 340 upon 1.7. So this is 3400 upon 70, and therefore the frequency is 200 hertz. And time period t is equal to 1 upon n, that is equal to 1 upon 200, that is equal to half मतलब 0.5 upon 0.00, that will be 0.005 seconds. That is the second answer. And this is so easy. इतने simple questions होते हैं. अगला क्वेश्चन. मुझे कई बार लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद डील कर सकते हैं, बट फिर भी आपको कॉलेज के लिए अगर चाहिए तो फिर एक लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लूँगा. Is that easy? I know it's very easy. अगला क्वेश्चन. कैन यू हियर मी? क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा. ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 hertz produces the sound waves of wavelength 2 meter. Calculate the speed of the sound. V is equal to n lambda 170 into 2, that is 340 meter per second. ये मुझे नहीं लगता हमें सॉल्व भी करने चाहिए, बट स्टिल बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सी वर्मा सॉल्व करूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँ. आपको क्या लगता है? स्टिल चलिए अगले क्वेश्चन पर चले. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री में का 3. थर्ड क्वेश्चन. An echo sounder in the third question. echo की बात हो रही है यहाँ पर. An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 seconds after it was sent. If the speed of the sound is 1500 meter, how deep is the shoal? अब देखिए यहाँ पर एक बोट है. इस बोट में पानी के अंदर कोई मछली है. ठीक है, तो इसने कुछ वेव्स रेडिएट किए. अब ये वेव्स जा रहे हैं और इसको टच करके फिर वापस आ जाएगा, और उसको जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? टाइम इज 0.45 seconds. लेट अस से दिस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है यहाँ से मछली तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस जी होगा तो हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग, जाने का और आने का. isn't it? The speed of sound is equal to distance upon time. The distance is 2d, isn't it? So 2d is equal to s into t. हमको d ही चाहिए ना. Speed of sound is 1500 into 0.45 seconds. So this will become 15 into 45,
and distance is 15 upon 45, 15 into 45 upon 2. तो कर लीजिए, 6. So this will become 337.5. That is the distance. I hope it is clear to you. Okay. Can you all hear it? तो HSC के जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. गर्ल स्टैंड्स fourth question. A girl stands 1 centimeter, 3 meter away from the high wall. Wall. Let me try to sketch for the wall. This is the girl who is standing. She is standing at what distance from the wall? And this distance is 170 meters. Okay. So the question पूरी तरह से पूरी हो रहा है. A girl stands 1 centimeter away from the high wall and claps her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. If she makes 60 claps in a minute, what value should be the speed of sound in the air? 60 claps in a minute. First part, if I'm going to solve, if she is clapping 60 claps in a minute, मतलब 1 मिनट में 60 seconds होते हैं. So 1 clap in a second, 1 clap in a second बराबर है क्या? Yes or no? Now this distance is s. तो एक क्लैप हो रहा है, एक क्लैप उसने जैसे ही किया तो साउंड विल स्टार्ट ट्रैवलिंग. वो साउंड ट्रैवल करेगा, आगे जाएगा, यहाँ से बैंग करके वापस आएगा, यहाँ से दोबारा वो ट्रैवल करना शुरू करेगा, इधर आएगा, isn't it? और जब वो साउंड उसका वापस आता है, दैट इज द इको. इट कोइंसाइड्स विद द नेक्स्ट क्लैप. इट कोइंसाइड्स विद द नेक्स्ट क्लैप. तो नेक्स्ट क्लैप 1 सेकंड के बाद आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? जाना और वापस आना, दैट इज 2s. और उसके लिए उसको टाइम कितना मिल रहा है? अभी एक क्लैप हो गया, 1 सेकंड के बाद अगला क्लैप उसके साथ वो ये इसका जो इको है वो मैच कर रहा है. So it is getting 1 second, isn't it? So what is the distance it is covering? 2 into 170, and time it is getting is 1 second. This is the distance and this is the time. So what is the velocity? Velocity is 340 meter per second. Is this clear to all? समझ में आ गया? That is the first answer. Second answer के लिए now she moves to another location and finds that she should now make 45 claps in a minute to coincide with the successive echoes. Okay. अब वो दूसरे लोकेशन पे जा रही है, अदर लोकेशन. ठीक है, कोई अदर लोकेशन है, समझो कि इसने यहाँ से उसने क्लैप करना शुरू कर दिया. ऐसे I don't know what is the distance here. I'll say that distance is s1. अब उसके बाद अगर हमें इक्वेशन लिखना पड़े तो उसको 45 claps in a minute, in 1 minute, मतलब 60 seconds. Are you understanding what I'm saying there? 60 सेकेंड में 45 claps.
समझे? तो 1 सेकंड में कितना, या 45 क्लैप्स के लिए 60 सेकंड, तो एक क्लैप के लिए कितना, एक क्लैप के लिए इसके लिए कितना, तो उसके लिए कितना, हाउ डू आई गेट दैट? इट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 into 60 upon 45. तो 15 चौक 60, 15 4/3 सेकेंड्स। उसको एक 45 क्लैप्स के लिए 60 सेकेंड, तो एक एक क्लैप के लिए इट इज 60 अपॉन दिस इनटू दिस अपॉन दैट, 4/3 seconds. So one clap in 45 claps per minute. कुछ गड़बड़ हो रहा है? एक सेकंड, उसको उल्टा लिखते हैं, 45 claps. I'll just write this properly. 45 claps corresponds to 60 seconds. So one clap corresponds to t. So t is equal to 60 upon 45. That means 4/3 seconds मिलेंगे उसको एक क्लैप के लिए, एक क्लैप पूरा होने के लिए। अब देखिए, ये यहाँ से क्लैप करेगी तो यहाँ से जाएगा और वापस आएगा, isn't it? यहाँ से जाएगा और वापस आएगा, तो what is the distance? Speed of sound तो उतना ही रहेगा, but the distance is 2s1 and the time taken is t1. I'll call this time as t1, isn't it? So the speed we have calculated 340. The speed that we have calculated is 340 into t1. T1 is 4/3 is equal to 2s1. So 2 to the 4, 2/3. कितना आएगा? This is 340 into 2 upon 3. 340 into 2 by 3 is equal to the distance s1. This is 680 upon 3. 3 to the 6. Okay? 3 to the 6. 3 to the 6. 2 बचा 20. 3 6. 3 6. तो 226.67 मीटर इतने डिस्टेंस पर वो होगा। ये आंसर जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस हैज टू बी 226.67 मीटर, इतने डिस्टेंस पर वो करना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? हेलो हेलो, आर यू देयर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इसको कर ही लेते हैं। आपको ये नहीं रहेगा ख्याल कि हमारा ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम या कॉलेज एग्जाम। साउंड वेव ए हैज द पीरियड ऑफ sound wave A has a period of t of A 0.015 seconds and B has a period of tb 0.025 seconds. Which sound has greater frequency? Frequency n is the reciprocal of this. So what is Na? Is 1 upon 0.015, मतलब 1000 upon 15, and here n of B is 1 upon 0.025, मतलब 1000 upon 25. समझे? दिस इज Na and Nb, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। रिपीट, जिसका
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, समझे? तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा. सो n, दिस इज n ऑफ a. So n of a is greater. Which sound has greater frequency? A has greater frequency. Isn't it? अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो. क्वेश्चन नंबर इधर 6 नहीं डायरेक्ट 7 आता है. बहुत अच्छी बात है. थ्री में क्या 7. देखो अब यहाँ पे क्या पूछा. एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, so v in air will be 1.75 times, is equal to 1.75 times its speed at ntp. Speed at ntp is called as normal temperature of pressure. ntp हम क्या कहते हैं इसको, normal temperature and pressure. ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन. एंड प्रेशर is 1 atmospheric pressure. मतलब H rho G सब्स्टिट्यूट करें. H rho G सब्स्टिट्यूट करें तो H is 0.76 meter of mercury. Density of mercury is 13,600. This is a meter. 13,600 kg per meter cube. And into N is 9.8. जो हमें ये कैलकुलेट किया जाएगा कि 1.01325 into 10 raised to 5 प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. हमें ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है तो हमें याद रखना पड़ेगा. ओके. चलिए अब इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, जिसको हम v0 कहते हैं. वी कॉल दिस एज v0. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है. एंड हमको ये बताएं. नाउ वी नो द फार्मूला दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, अगर टेम्परेचर के साथ कंपेयर करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. देखिए यहाँ पे बराबर है. isn't it? तो उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. अब अगर हमें ये लिखना है यहाँ पे तो मैं इसको लिखूंगा v is equal to k times square root of t, and v0 is equal to k times square root of t0. And now let's check the ratio. So this will give me what? K gets cancelled. K gets cancelled. Okay. And this will become v upon v0 is equal to square root of t upon t0. They are asking at what temperature. मतलब t is equal to question mark. V is equal to 1.75 times v0. That is equal to square root of t. And t0 को मैं क्या इतना लिखूंगा? t0 as we know. This is t0. That is 270. इसमें से ये gets cancelled. Now I'll square both the sides. Squaring both the sides. So इसको square करेंगे तो ये कितना बनेगा जी? 525 and is equal to t upon 270. Now you can do these values in the log calculation. Log calculation से कर सकते हैं. और फिर आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं. Let us do this. So इसको अगर हम कैलकुलेट करें 273 into this 111
1.75 का स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया है 3 पॉइंट क्या आएगा 3.0625 says 3.0625 0625 into 275 836.60. So temperature is 836.0 Kelvin. केल्विन है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं 836 माइनस 270 तो कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 3 563 डिग्री सेल्सियस दैट्स द आंसर दिस इज क्लियर टू so that's the next question I'll go for the next question the next question 3 mega 8 क्या दिया है यहाँ पे a man standing between the two parallel cliffs fires a gun this is the man he is standing between two parallel cliffs समझो कि एक क्लिफ यहाँ पर है और एक यहाँ ठीक है he learns he hears two echoes one after 3 seconds and the other after 5 seconds तो यहाँ से जो वो फायर करता है तो ये साउंड जाएगा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा उसके लिए उसको टाइम कितना लगता है 6 सेकंड्स और ये वाला एको जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर है ये वाला एको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको वापस आने so t2 is equal to 5 seconds the separation between the two cliffs is 1360 this distance is 1360 चलिए जो मैन का जो डिस्टेंस है वो कितना हम मानेंगे let us say this man का distance from here is x तो clearly ये जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा जी second distance needs to be 1360 minus x 1360 minus x ठीक है what is the speed of the sound कोई नहीं हम इसको बोलते हैं इधर का जो टाइम है उसको t1 बोलते हैं 3 seconds and 5 seconds देखिए यहाँ पर जाकर वापस आने के लिए उसको इतना टाइम लग रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग तो वन वे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है जी इसको सिर्फ वन वे डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस x इसका आधा ना दैट इज 1.5 सेकंड्स और यहाँ से इसको टोटल 5 सेकंड्स लग रहे हैं लेकिन सिर्फ वन वे डिस्टेंस ट्रैवल करना सिर्फ जाने का और कॉल दिस एज टाइम t2 इसका आधा दैट इज 2.5 सेकंड्स तो इसका मतलब है 1360 डिस्टेंस के लिए उसको टाइम कितना लगेगा द एडिशन ऑफ दीस टू समझेगा सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड
It is the distance upon time. Distance is 1360. Time is t1 plus t2. That is 2 plus 2, 4. So that is equal to 340 meters. Is this clear to you all? Hello? Hello? Can you hear me? Okay. Question number 9. 9 question. What simple questions are you? What is other simple question? Question number 9. 3 mega 9. 3 support 9. इन्होंने कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं रखा है इसके लिए हम इसको खत्म कर देते हैं सॉल्व if the velocity of sound in the air at a given place on 2 different days of a given week अलग अलग दिनों पर are in the ratio 1:1.1 velocity on one day and velocity on the second day, this is in the ratio 1/1.1, that means 10:11. ठीक है, assuming that the temperatures on the 2 days to be same, so T1 is equal to T2, temperature is same. What quantitative conclusion can you draw about the condition of the 2 days? तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता ही करता है, लेकिन और एक चीज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी. वेलोसिटी moist air is greater than velocity of sound in the dry air. Moist air में sound जल्दी भागता है, पानी में ज़्यादा होता है उसका velocity. Now temperatures are same, isn't it? And moist air की अगर हम बात करें कि velocity is inversely proportional to the density. The velocity is inversely proportional to the density. Let me write down this thing here. Velocity is inversely proportional to density, isn't it? तो यहाँ पर V2 is greater than V1, तो मैं बोलूँगा ρ1 is greater than ρ2, क्योंकि V2 अगर बड़ा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ρ2 छोटा होगा, isn't it? ρ2 छोटा होगा, isn't it? ρ2 मतलब दूसरा वाला दिन, this is one day. तो जहाँ पर डेंसिटी किसका ज्यादा होता है जी? डेंसिटी किसका ज्यादा है? डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इफ आई कंसीडर. तो मॉइस्ट एयर ऊपर चला जाता है तो ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, isn't it? So this is dry and this is moist. Moist मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, isn't it? So air is we can say therefore इन्होंने बोला है कि V2 is greater than V1 मतलब ρ1 is greater than ρ2, बराबर है क्या? That means day 1 is dry, isn't it? Velocity of sound is greater, so we can say moisture on first day जो है वो dry होगा and second day जो है वो moist होगा, मतलब I can say that humidity. अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसके फॉर्मेट में कि भाई V1/V2 is equal to 10/11 and that is equal to reciprocal relation से होगा ये ρ2/ρ1, समझे क्या? So ρ1 is greater than ρ2. This is what I can say, isn't it? ρ1 is a dry day. ρ1 is a dry day and ρ2 is the moist day. So if I cross multiply, what can I say here? That rho for dry day is equal to 11/10 times rho for moist day, or in other words it is 1.1 times rho for the moist day. That's what it says. Velocity square दिया है क्या इन्होंने? चेक कर लेंगे. Square root of rho दिया है, right. Square root of square root of यहाँ पे भी square root करेंगे.
यहाँ पे भी स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ही होगा, isn't it? ये स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको स्क्वायर स्क्वायरिंग देते हैं, स्क्वायरिंग हम देते हैं स्क्वायर इट, स्क्वायर सो दिस बिकम 100 इसका स्क्वायर अपॉन 121, और इसका स्क्वायर हो जाएगा रो फॉर मॉइस्ट और रो फॉर ड्राई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरे नंबर्स जो है वो आप इस तरफ ट्रांसफर कीजिएगा ड्राई एयर, सो रो फॉर ड्राई एयर is 121 upon 100 times rho for moist air, that is equal to 1.21 times rho for the moist air. That's what is said over there. Is this clear to all? Hello, is that okay? Hello, is that okay? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन मुझे लगता है उसे शुरू करने से पहले हम री लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि ये कट हो जाएगा, इससे अच्छा पहले हम इसको री लॉग इन कर लेते हैं। So this is question number 3. Before I begin, I'll just pause this. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's go for the next question. 3 में का चल, a police car travels towards, अब यहाँ पर मुझे डॉपलर इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे डॉपलर इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं यहाँ पर आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता दूँ। मैंने आपको बताया था कि डॉपलर इफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, लेट अस कॉपी डाउन दिस थिंग्स, या फिर मैं यहाँ पर कुछ 8 केसेस डिस्कस करता हूँ। I'll use this formula or with sign convention, sir. ये फॉर्मूला मुझे वहां पर यूज करना है। Well, let's copy this formula over there. This is the formula. Okay. A police car travels towards a stationary observer. So let's say this is the car. It is traveling towards a stationary observer. The observer is stationary. Observer is stationary. O means observer. S is the source. S का मतलब होता है source, source of sound. And O का मतलब होता है observer. कई बार उसको लिसनर भी कहते हैं, ऑब्जर्वर और लिसनर, ठीक है। तो इन दिस केस लेट्स से, चलिए, तो ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ओ इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस कार इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके, एट अ स्पीड ऑफ, सो दिस इज द वेलोसिटी। अब ये कार जो है ये सायरन बजा रही है, the siren on the car emits a sound of frequency, तो इसके ऊपर सायरन बिठाया गया है। सायरन अगर बिठाया गया तो ये सायरन आवाज करेगा और यहाँ से साउंड जाएगा, so this is velocity of the sound v and this is velocity of the source of sound. साउंड अपनी स्पीड से जाएगा, लेकिन सोर्स ऑफ साउंड मतलब कार का स्पीड कितना है, कार का स्पीड है 250, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, कार का स्पीड इज 15 मीटर पर सेकंड, ओके। और यहाँ से जो साउंड जा रहा है उस साउंड का फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 250 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्डेड मतलब क्या, जिसको कितना फ्रीक्वेंसी फील होगा, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अलग होता है, लेकिन ये सोर्स मूव होगा, कभी ऑब्जर्वर मूव होगा, कभी दोनों मूव होंगे, तो उस वजह से द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी दैट ही हियर्स, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, जिसको हम एन डैश बोलते हैं, एन डैश इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो उसको अपीयर होगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी will be denoted by n dash, and n is the actual frequency of sound, n is the actual frequency of the sound, तो actual frequency इन्होंने दिया है इतना, and velocity of sound is given to be 340 meter per second, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, I want to use the formula। मुझे यहाँ पर
फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन ये दिया था कि वी एस एंड वी ओ दोनों के दोनों अगर साउंड के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो वो पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे साउंड के तो वो निगेटिव होते हैं। अब ये तो जीरो ही है तो इसकी तो कोई बात नहीं। तो सोर्स इस दिशा में जा रहा है और साउंड भी इसी दिशा में जाएगा, सो वी एस यहाँ पर प्लस होगा। प्लस होगा मतलब यहाँ पर वो प्लस होगा, मतलब ये बाहर का साइन माइनस एज इट इज रहेगा। सो हाउ दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड, बिकॉज देयर आर 8 केसेस में हर बार ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है। व्हाट विल बी एन डैश हियर, इट विल बी वी माइनस कुछ नहीं है डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, क्योंकि वी एस का साइन पॉजिटिव है तो वी एस एज इट इज रहेगा। अगर वी एस का साइन यहाँ पे निगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक्चुअल फॉर्मूले में दोनों जगह माइनस है, समझ में आ गया। लेकिन फिर माइनस प्लस इज माइनस इनटू एन, ये है मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब मुझे बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो एन डैश इज इक्वल टू बी, व्हाट इज बी, बी इज 340, एन इज 250 डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। वी कितना है, व्हाट इज वी, 340 माइनस 50, तो ये कितना आएगा, 340 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 325, सही है ना, 325। तो ये मेरे ख्याल से whatever this 5 I don't think I see the shortest of all. इसमें कैलकुलेशन से कर लेंगे। Here this is 340 into 250 equal to divided by 325, 261.53. This is 261.53 hertz. That's the answer. Is this clear to us? This is how we solve the problem based on Doppler effect. I hope this is clear to you. Say yes. No. The last question. Go for the last question. तो यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड अगेन शायद है। चलिए दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट और उसका फॉर्मूला उसके साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन डॉपलर इफेक्ट। The apparent frequency is different than the actual frequency whenever either the sound is traveling or the listener is traveling or both are traveling, the source is traveling. Sound emitted from the siren of an ambulance, ambulance के siren का frequency, so this is the actual frequency is equal to n. The speed of the sound, this is v. To calculate the difference in the frequencies heard by the stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 मीटर पर सेकंड। at a speed मतलब ये देखिए ये ऑब्जर्वर है, मैं आपको यहाँ पर क्रॉस स्केच ड्रॉ करके बता देता हूँ। दिस इज एन ऑब्जर्वर। तो पहले एम्बुलेंस उसके पास आ रहा, पहले एम्बुलेंस उसकी तरफ अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। अब देखिए यहाँ पर जो सायरन होगा बिठाया जाएगा, उसके यहाँ से साउंड जाएगा, वो साउंड इस तरह जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। सोर्स का वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये प्लस होगा, इसलिए ये प्लस होगा। समझ में आ गई बात। तो हियर द एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग, द एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, अप्रोच कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द सेकंड सिचुएशन कि यहाँ से वो एम्बुलेंस पास होकर अब आगे जा रहा है। लेट अस कंसीडर द सिनेरियो कि एम्बुलेंस अब उसके यहाँ से दूर जा रहा है, एम्बुलेंस इज गोइंग अवे नाउ, ठीक है। तो एम्बुलेंस इस दिशा में ऐसे जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स व्हिच इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ से जो भी कुछ सायरन बजेगा, देखिए गौर से, यहाँ से जो भी कुछ सायरन बजेगा उस सायरन को मैं ऐसे दिखाऊंगा, मतलब
इस तरफ अगर सुनने वाला है तो ये साउंड वेव इस तरफ जाएंगे, लेकिन अब ऑब्जर्वर इधर है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो साउंड वेव जो निकलेंगे वो इस तरह जाएंगे। So this is the velocity of sound and this is the velocity of the source. Source का velocity और sound का velocity opposite है and hence ये minus होगा according to the sign conventions. Is this clear to all? ठीक है? So here the ambulance is receding away. The ambulance is receding away from the observer. Receding away. And here it is approaching towards the observer. Is this clear to all? Is that okay? ठीक है? तो ये अलग अलग केसेस है। I'll say this is case 1, इसका फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा and this is case 2, और दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें पता करना है। Let's see. तो I'll consider the case 1 now. Case 1 फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? फॉर्मूला says n dash is equal to n v minus vo upon v minus vs. vs प्लस है and vo जीरो है and this vs is plus. तो ये क्या बन जाएगा? n dash is equal to v. What is v here? v is 340. Yes, 340 upon v minus 340 minus 30 into फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी उसका 200 सॉरी फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज into 1500 हर्ट्ज। ये कैलकुलेट ये होगा फर्स्ट केस में, और यही चीज अगर मुझे दूसरे वाले केस में लिखनी है तो वो क्या बन जाएगा? सेकेंड केस n dash केस 2 n dash is equal to v minus vo upon v minus vs into n। अब यहाँ पर भी v0 is 0 और ये जो है वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। So how the formula gets modified? The formula gets modified as n2 dash is equal to v upon v plus vs into n. समझे? So that is nothing but 340 divided by 340 plus 30 into n. n माने 1500. So let's calculate this n1 dash and n2 dash. तो कितना बनेगा? 340 into 1500 divided by 310. Okay? और ये क्या होगा? 340 into 1500 divided by 370. Okay? So let's calculate this one. Let's calculate it. So you can have 34 into 1500 divided by 21. 1645 and 1 dash 1645. Okay? अब n2 dash लिखना है। 34 into 1500 divided by 37. 1378. 1378 grams. And this is 1645 grams. अब उन दोनों का डिफरेंस चाहिए, n1 dash minus n2 dash. 1645 minus 1378. 267 grams. The answer is 267 grams. So the difference in the two frequencies 267 hertz. इन्होंने कुछ कभी भलता आंसर दिया है 267 hertz. उनको लेटर भेज दो प्लीज।
ये आपका आंसर गलत है। हाँ बोलो ना।